Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is plant tissue culture. We will see what this plant tissue culture is. Plant tissue culture is actually a technique. It is a technique of growing separated cells, tissues, and organs. It is a technique of growing separated cells, tissues, and organs in an artificially prepared culture medium in an artificially prepared culture medium aseptically under controlled conditions under controlled conditions. And what is this plant tissue culture? It is simply a technique of growing separated cells, tissues, and organs in an artificially prepared culture medium aseptically under controlled conditions. इसका मतलब क्या हो गया? यह सह टेक्निक यथ मज ग्रो करा सेपरेटेड या इंडिविजुअल सेल्स या लक टिश्यूज या पीसेस और पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स इन एन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कल्चर मीडियम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करा तैयार करा कल्चर मीडियम यथ न्यूट्रिएंट मीडियम वन न्यूट्रिएंट मीडियम वन तो पत क्या वी ग्रो दी cells or tissues or organs in this culture medium aseptically means under complete sterile conditions, non-living conditions, and under those conditions where no living organism, no microorganism, no pathogen can grow under controlled condition. Everything is under control. प्रथ कह चीज कंट्रोलस मज थावा. It is under artificial control, under the control of the plant tissue culturist. तमिक मतलब गो इमिस कुस गुजा इमिस कम न्यूट्रिएंट्स जरूरत. All are controlled or are artificially provided to it. यानी कुस चीज इमिस जरूरी इमिस योरे प्रोवाइड यवान करने. इमिस किस लाइट जरूरत इमिस लाइट जरूरत इमिस डार्कनेस जरूरत. That is also controlled. That is also provided to it. That is also provided by the tissue culturist. इत्थै कनै इमिस कोता टेम्परेचर जरूरत अथ सेली अथ टिश्यूस अथ ऑर्गनस कोता टेम्परेचर जरूरत केम साथ कोता टेम्परेचर जरूरत फॉर ग्रोथ टू डेवलप समिस आर्टिफिशियली प्रोवाइड करा समिस आर्टिफिशियली प्रोवाइड एंड इट इज डन इन विट्रो. It is done in vitro. It is done in vitro. And in vitro means it is not done in the natural conditions but in the artificial conditions. The conditions which are prepared, which are developed by the tissue culturists. It is done in vitro. That is in test tubes. यह is करा completely artificially in test tubes या in flasks, and this is done in the laboratory. तमुक मतलब गो युस टिश्यू कल्चर टेक्निक यह लेबॉर्टरी मज करा यह लेबॉर्टरी मज यह फील्डस मज करा कि कथ मज टेस्ट ट्यूबर मज करा या करा फ्लास्कन मज तो एंड दीज टेस्ट ट्यूब्स फ्लास्क्स even the material which we use for the tissue culture, that is the cell tissue or the organ, they are thoroughly sterilized. We sterilize thoroughly. यह असल पे sterilize करा यानी क्या करा यम पे contaminants आसन यम यमो सत infection हेके गछि. We remove those contaminants thoroughly by different techniques.
Now, this plant tissue culture, this technique of growing new cell plants from single cellars, tissues, and organs, this was for the first time reported by, this was done by G. Haberland. G. Haberland. Haberland in 1902. This technique, that is tissue culture, the technique of plant tissue culture, it was first suggested by and it was first suggested by G. Haberland in 1902. And you see plant tissue culture technique चे यह हसा कोर introduce G. Haberland 1902 मज तो वो क्या वुचान यह plant tissue culture अत plant tissue culture मज generally यूस cell या tissue या organ यम पे नो plant हासिल करा that is generally taken from a suitable plant organ. Suitable plant organ. The suitable plant organ means it must be meristematically active part. ये गस meristematically active part आसन it must be capable of division. यह हसा गस हमेशा आसन in a state of division. It must be the active part of the plant. यह हसा गस active cell आसन या active tissue आसन. तो generally we take this part of the plant for this plant tissue culture technique, and this part, it is generally, this cell, it is generally taken from a root tip. Any meristematic active parts are root tip, shoot tip, leaf petiole. You must manage meristematic active parts, anthers, any anther, ovule, embryo, etc. यानी शॉर्टस मज वन युस ये सेल या टिश्यू या आर्गन अस प्लांट टिश्यू खतर इस्तेमाल करा यह तम प्लांट के हिस्स पे विच इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिव पार्ट यानी विच इज कंटिन्यूस इन a state of division, which is continuously growing, that is root tip, shoot tip, leaf petiole, anther, ovule या embryo, etc. तो now the part of the plant, the piece of the plant, ये शूटुक छा, ये रूटुक छा, ये लीफुक छा, ये एंथरुक छा, ये ओव्यूलुक छा, embryo छा, the part of the plant which we use for this plant tissue culture, that is called explant. That is called explant. यानी अत explant वनान क्या करा दपा चूंकि यह आर्टिफिशियली कल्चर मीडियम तैयार करा ये एक्सप्लांट तुला बस त्रावा अथ मज यानी अकिस बीकरस मज या अकिस टेस्ट ट्यूबस मज कल्चर मीडियम प्रिपेयर करा ये मज मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट त्रावा शुगर सक्रोज कोता जरूरत, प्रोटीनस कत्या जरूरत, फैटस कत्या जरूरत, यह मुख्तलिफ मिनरल्स कत्या जरूरत, अम अलाव कि ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंट करान ऑक्सिन त्रावा, जिब्रेलिन त्रावा, साइटोकाइनिन त्रावा तो क्या करा वी प्रिपेयर एन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कल्चर मीडियम प्रिपेयर करा ये न्यूट्रिएंट मीडियम वन या कल्चर मीडियम वन अत मज एक्सप्लांट त्रावा दपा ये एक्सप्लांट अत मज त्रावा अत क्या गसा मल्टीप्लिकेशन and he क्या करा it repeatedly divides, it multiplies in all the plants and produces an undifferentiated mass of cells. Undifferentiated mass of cells. It has such undifferentiated mass of cells, but that mass of cells is undifferentiated. Undifferentiated means where there is no differentiation of root, stem, leaf, etc. यानी बिल्कुल uniform mass of cells. This uniform undifferentiated mass of cells, this is called as the callus. Callus. Undifferentiated mass of cells callus. Callus. तो पे करा callus अमिक अत लकट पीस बनावा तो योर कन नो कल्चर मीडियम प्रिपेयर करा तैयार करा तो अमिक पीसेस मज त्रावा नयस कल्चर मीडियमस मज तो इथकन आफ्टर सम टाइम क्योंकि दिस सेकंड कल्चर मीडियम दिस इज सप्लीमेंटेड विद ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, mostly auxin and cytokine. Auxin promotes root formation,
auxin's comes to promote root formation, cytokinins comes to promote shoot formation. And it can undifferentiated mass undifferentiated piece क्योंकि piece is undifferentiated आसा ये cell ये अथ मज त्रो अम सच differentiation गसा युस ऑक्सिन यह रूट बनानस में मदद करान युस साइटोकाइनिन यह शूट बनानस में मदद करान इत कन आफ्टर सम टाइम वी गेट ए स्मॉल प्लांटलेट अख प्लांटलेट मिला यह प्लांटलेट पत ट्रांसफर करा टू पॉट्स यानी तुम गलम या नर्सरी मज करा तुम आर्टिफिशली प्रिपेयर कर्म तो तत वुचा अगर यह सक्सेसफुल रूद तो अकॉर्डिंगली अमिच मल्टिप्लिकेशन करा अमिच पत प्रोवाइड करा टू फार्मर्स एंड अदर प्लांट growers horticulturists agriculturists etc इत कन नो प्लांट प्रोड्यूस करा इत कन करा many plants produce from a small mass of tissue from a small part of a plant we can generate large number of plants in a very short period of time युतुय नहीं कि बल्कि we can produce disease free plants यहाँ से virus free plants in a number of plants, in a number of diseased plants by this plant tissue culture technique. क्या अत मज मिरिस्मेट के एक्टिव पार्ट दपा अगर प्लांट बाकी डिजीज मगर अमुक टिप अमुक एक्टिव पोर्शन अत जल्दी जल्दी बेमारी पोरा कह और जल्दी जल्दी यह इन्फेक्शन वाता कह अम ब्रो इन्फेक्शन वात अत मल्टिप्लिकेशन गमत अत डिवीजन गुमुत नतीज नेरा अमुक टिप it is generally free from infection it can we use these tips which are free from disease for producing new plants it can heko from diseased plants the healthy plants produce kariya and this is about plant tissue culture the introduction of the plant tissue culture now other aspects of plant tissue culture we will take in the next lecture this is all for today thank you assalamu alaikum